हेलो 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 फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो, एम आई लाइव? माय ऑडिबल? माय विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? All these terms used on a daily basis, and which is so absurd, you know. देख। ओके, तो ऑलराइट दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव स्ट्रीम में, जहां पे वी विल बिल्ड एडिट पोर्टफोलियो फंक्शनैलिटी, अपडेट पोर्टफोलियो फंक्शनैलिटी, राइट। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से हम या फिर यहाँ से हम अपने पोर्टफोलियो के उसमें जा सकते हैं, राइट, पेज पे। तो वहां पे जाके हम पोर्टफोलियो का एडिट का वो देंगे फीचर, ठीक है? इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, portfolio P01, because we have a portfolio named P01, right? And I hate npm. npm is just way too much better. कितना स्लो है भाई, कितना स्लो है। एनी हाउ, वी आर हेयर, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ कार्ड्स हैं जो डेटा दिखाएंगे, विच इज फाइन। यहाँ पे मैं एडिट का, डिलीट का वो दे दूंगा, राइट? फंक्शनैलिटी, वी विल अपडेट दिस टेबल, एंड यहाँ पे एक एडिट बटन दे देंगे, और मे बी वी कैन जस्ट, क्या हो गया, हो कि नहीं रहा जो मैं करना चाह रहा हूँ? ओपन इन अ न्यू टैब, वाओ, ट्रांजैक्शन, मेक अ कॉपी, दिस कैन बी डन, एंड डिलीट, और यहाँ पे एडिट और डिलीट नहीं, बट व्हाट इफ आई वांट टू चेंज द पोर्टफोलियो नेम, देन ट्रांजैक्शन तो एक एक करके डिलीट यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हाउ वुड द यूआई विल लुक, एंड देन विल डीप डाइव इनटू द कोड, राइट? सो दिस इज आवर टेबल, राइट? तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक डिलीट का ऑप्शन, और यहाँ पे एक वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, let's say user selects multiple, right, and then a delete option here, that is good, that is cool. यहाँ पे edit, copy, delete का option for a singular transaction. portfolio name का कैसे करें is the question. portfolio name के लिए what I'm thinking, I can again take a text field and put up this, right, what you call this, an edit button, right? As that is what only comes to my mind. But again, this is a header component, and this is that is like all different altogether. At the very first place, हमारे components में अगर हम जाएंगे, तो हमें header दिखेगा कहीं तो, हाँ, dashboard header. So you see, it's like this, and this is a use client. Okay, so at least that is use client. That is a little easier on us. That can be done. Actually, that can be done, right? Uh, all these values are good. All right, so let's start with portfolio name ka edit, right, which will be in our header, and then we will change the table schema, and then we'll come to the actions, and then we'll do the actions of the table, right? Makes sense? Makes sense. तो ये अपना डैशबोर्ड हेडर है ना? पाथ नेम इंक्लूड्स क्रिएट न्यू, पाथ नेम इंक्लूड्स पोर्टफोलियो, राइट? तो ये हो गया अपना यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हम पूरे कंपोनेंट को रेंडर करेंगे,
Let me just do it like this. Validate it if it works. It works. यहाँ पे अब हमारा पूरा एक component आ जाएगा, which would be portfolio portfolio header.csx and a page, and export default function, not page, but what would be portfolio header. It will get a prop name of portfolio name. It will not render anything. It will be like this. I will cut you. I will delete you. I will portfolio header, portfolio name, like this. And I will be here, portfolio name. Let me just render it as an object, and it should be all together fine. Correct. Now मोर और लेस हमें बस कोड साइड से उठाना है और पेस्ट करना है. Let's see. We'll take a text field from MUI, right? And wherever that text field is, we'll take the whole component along with us. Right. और हमें चाहिए होगा एक पेंसिल आइकन राइट बिसाइड इट. पेंसिल आइकन को इंपोर्ट कर लेंगे. पेंसिल आइकन, यस. और कुछ स्टेट्स चाहिए होंगे. It would be default value. We will see, है ना. क्या स्टेट्स चाहिए होंगे. वेरिएंट सम sx, राइट. सम वैल्यू, इनपुट प्रॉप्स, ऑन क्लिक नहीं चाहिए. ऑलराइट, अगर कुछ चाहिए होंगे तो हम वो एडवेरिएंट इंडिपेंडेंटली वहां पर बना सकते हैं. एंड या इट इज हियर. कूल. So let's start with some CSS. If we link div, with class name is flex. First things first. कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज नहीं चाहिए. वाइट स्पेस, मार्जिन नहीं चाहिए. What happens now? It is very small, still very small. Let's do a thing. हमने यहाँ पे क्या डाला था. text 3xl. It's like what, 1 point. दोनों ही लाइन उठा लो, है ना. font size, line height, cool. और क्या क्या है. height, full blur, few things.
unimportant. Show me something good, something good, something good. No, no. Why not? Why is that not coming? Is it because of this? Will it come now? हाँ. Font bold चाहिए है ना? So that means font weight 700. इसको हम खुद लिख लेंगे. Font weight 700. काली रातों का काला साया हूँ. कठपुतली की जान. Right, makes sense, right? And if I come here, size would increase to 20. MR is 1 is not required. This, all this is good. Oh, size 20 से वो actually छोटा हो गया. Oh, बहुत बड़ा हो गया. So let's do a 10. काली रातों का काला साया हूँ. Let's do a 7 and let's do a items end. Okay, it's still very big. I wanted to back it S5. हाँ चलेगा. Now cursor would be pointer. Whenever I'll click this, that will get focus and it will be editable. Now need only look at the false for a minute and let's see. Okay, it's not taking anything because we have a prop value, default value, and so it should be taking something. And if I do it's a huge name, it will go like that. Move this, and if I insert this, that goes there. Cool. So let me delete this. I don't think event is needed anymore. Now we will have some states. So let's start with const set. Edit. Set edit is equals to use state false. Const value comma set value is equals to use state portfolio name. Value is equals to value and on change e set value e dot target dot value read only edit uh, set edit on click through. Okay, we'll do that thing. अगर एडिट हो रहा है तो यहाँ पे we will render check icon else
we will render pencil icon, है ना? If I take this, that comes cool. And in that case, let's go to ROI monk के server वाले पे tree पे, because I want to go to which file? What was that file? I navbar, and I will quickly do a blame, I guess. Name is the line. Okay, never mind. Not like this. We'll go to the history. We'll go few commits back. V6 June, yes. We'll go here. No, the side nav bar. Okay, stand up, expand up, continue, expand up. हाँ, यहाँ कहीं पे होना चाहिए. Maybe one more line. Yes, pencil icon, check icon. Let me just copy this, paste all of that here. On click, set edit, false. More or less is the same thing. Right? But यार, if I am not wrong, मैंने उसको ग्रीन कर देना था ना. कर्सर पॉइंटर उठाओ, पेस्ट करो. I don't know, but okay, it's fine, whatever, right? Set को false कर देंगे. Now let's see what happens now. I do something, it's editable. What the hell? Okay, it should be opposite. Okay, click on it, it's editable, and I click, and it becomes this. So when I click on this, it should make a check if that is unique or not. Right, if unique, it gives success, or else it reverts back to its original value. Okay, cool, makes sense, makes sense. So what we will do is uh, यहाँ पे, right, is sync, and we will call one of our portfolio action, update portfolio name. बट अब मैं पोर्टफोलियो आईडी कहाँ से लाऊं? पोर्टफोलियो आईडी कहाँ से लाऊं इज द क्वेश्चन. मेरे पे पुराना नाम है. तो मैं पहले यहाँ से पोर्टफोलियो रिसीव करूं, तो मेरे को यहाँ पे पोर्टफोलियो मिलेगा, और मैं पोर्टफोलियो को मिल भी नहीं रहा. इनफैक्ट इट जस्ट टेल्स.
मैं आईडी कैसे भेजूं, आईडी कैसे पाऊं, डेट पोर्टफोलियो नेम. Okay, that is tricky. Let's go to Prisma. I have a data with username. I want to update with new user name, but I only got old username. How? Let's ask Prisma. Okay, we can do this as well. Okay, let's do that. Let's update it a little. Get portfolio name by ID, maybe small d. Replace all and just copy this below. Update portfolio name by name. Now portfolio old name, portfolio new name. पोर्टफोलियो अपडेट ही है ना. हाँ, पोर्टफोलियो अपडेट वेयर name is portfolio and data is portfolio name. Return message suggests and that. And now we will copy this. We will paste it here. नेम और हम यहाँ पे देंगे दोनों वैल्यूज, पोर्टफोलियो नेम पुराना और हमारी वैल्यू const await response, right? And if response dot message equals to success, this all we will get from our create new page. We'll go home and we will copy these two lines. यार ये लाइन पूरी एक जगह लिखी जा सकती है, पता है, मे बी जस्ट इन अवर index.js or something, index.html or something, बट वही है, ऑप्टिमाइज सारा एक साथ ही कर लेंगे, है ना. टोस्ट कंटेनर, लेट मी जस्ट कॉपी दिस. फैक्ट वो भी सारा आई गेस एक ही जगह जा सकता है, बट ठीक है चलो, है ना. एंड आई विल कॉपी दिस. ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों, अच्छा हाँ सही है, होना चाहिए. एंड इफ आई कम, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यस, I will paste it here. If response dot message is to something went wrong, please try again. Else if, what are we sending? Access. Else if transaction. Okay.
Let's go to our side nav bar, है ना? We'll paste this. राइट, देखो सिंपल है. अगर रिस्पॉन्स में आया तो समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन. अगर ये वाला एरर आया, एग्जिस्ट्स वाला, तो हम बोलेंगे पोर्टफोलियो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज यूनिक नेम एल्स टूल्स डॉट सक्सेस योर पोर्टफोलियो नेम इज अपडेटेड सक्सेसफुली. ठीक है, सेट एडिट को फॉल्स कर देंगे एनीवे, एंड सेट वैल्यू को उठाएंगे. इन दिस केस we will do portfolio name, and in this case as well we will do a portfolio name, है ना? और लास्ट में set edit false, and I guess this should work. So if we come here, let's hope for the best. Hi. So nothing happens. Okay. एक चीज और करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पे edit. अगर एडिट हो रहा है तो इट शुड, क्या हो रहा है यार, गलत कीज दबा रहा हूँ. अगर वो एडिट हो रहा है तो यहाँ पे वो होना चाहिए. कम ऑन ड्यूड, गिव मी पॉइंटर प्रोग्रेस रिवर्ट टेक्स्ट, और एल्स पॉइंटर. पॉइंटर भी क्या, उसे डिफॉल्ट ही कर दूं क्या? डिफॉल्ट कर दो, वो फिर रिफ्रेश होगा क्या? बाई 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 बाई. तो this, nothing happens. Click on this, this becomes this. I do this and I save this. Something went wrong, please try again. और वो हो गया वैसे रीसेट. बहुत अच्छी बात है जो कि, बट एरर क्यों आया? एरर shouldn't have been there at the very first place. Okay, no problem, we can do that. I can arrange that for you. ये ले भाई. हाँ ये बताओ. अच्छा वो तो अपने आप. बट एक बात बताओ, वो टोस्ट क्यों इतना बड़ा था भाई? टोस्ट का साइज इतना बड़ा क्यों था? हाँ जी, टोस्ट का साइज इतना बड़ा क्यों था? आओ भाई, प्रिज्मा एआई से पूछते हैं. आईडी तो नहीं है भाई.
Okay, same thing I was thinking, to be very honest. When we send like this, no, तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना के डालना पड़ता है. होपफुली दिस शुड वर्क. ओके, अब क्या एरर आ गया भाई? Portfolio is not defined. Of course, portfolio is not defined. Response is defined. Response is the right word, bro. एक एक करके रंड जीते हैं. यार वो फट जाएगा. ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास तो वो है ही नहीं ना. लेट्स डू अ P03. लेट्स डू अ 31. सेव इट. पोर्टफोलियो नेम इज एडिटेड सक्सेसफुली. बट इसका क्यों इतना बड़ा आ रहा है? लेट मी जस्ट पुल इट अप. इसका क्यों इतना बड़ा आ रहा है? ओके, कि हेडर की सारी वो है. ओ वाओ. हेडर से, वो हेडर से वो कर रहा है उसको इनहेरिट. वाओ ड्यूड, दैट इज, आई don't know how to put that, but let's see. Style color yellow. Let me test it. Okay, and if it's success, it should be rerouted as well. So if I am not wrong, I have a router. Nope, I don't have a router here. No problem. I will create a router here. Const router is equals to use router, है ना? And I will routers dot push what is the link? Portfolio color. What is that new value? Now we'll have to go to P02. एक एक करके रंग जीते हैं. देखो ये अपडेटेड एट भी सही काम कर. देखो 26 तारीख हो गई 17. ओके, दिस इज द टाइमिंग थिंग. टाइमिंग इज 5:30 क्यों ले रहा है? बट एनी हाउ दिस इज फाइन, राइट? और 26, 17, 31 देखो. सॉरी 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 सॉरी. बट एनी हाउ अपडेट हो रहा है ना, ठीक है. दैट इज द प्राइमरी कंसर्न. लेट्स से
I do a 2 to 3 and your portfolio name is updated successfully and it is re-rendered. Very good. And this is also, wait, what the fuck? Sorry for the word. Undefined setting toggle. Oh, this is at update function component. Okay, okay, okay. Don't get angry. I will just remove this. I want to anyhow make it editable. Did the display? अरे, क्या क्या नहीं समझा. ये ओपन क्या है भाई? भाई कैसे वो मिस हो गया? इतना बड़ा और सिली एरर ऐसे कैसे मिस हो गया? Div cannot be a descendant of P. P टैग कहाँ यूज कर रहा हूँ यार मैं अब? P make it a div. इसे पहले से क्यों नहीं हो रहा था error? अचानक से कैसे होने लग गए? I mean, dude. Still 9 errors. Can't be. Expected server HTML to contain a matching div in header. Wow, bro. है तो है तो कौन सा div नहीं है? Main section dashboard.
No more errors, no. You're fine, right? सब ठीक है ना माही? Oof. Right. Let me make it a one. Let me save it. Cool. Now let me. What I was doing was उसको रोकूं कैसे? उसको लंबा कैसे रोकूं? वो लंबा रुकेगा यहाँ से. Makes no difference. I just have a question. इतना बड़ा कैसे हो गया अचानक से ये? ओ भाई वो वहां से होते हुए आ रहा है. Can't believe it. I just do this. हाँ भाई सी डॉट ओ भाई इसको करो. टेक्स्ट बेस क्या होता है? टेक्स्ट बेस इज इक्वल्स टू. आज मैंने अपने ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही काम किया था. यही कुछ फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर रहा था. इफ इज इट बेटर नाउ? व्हाट? हाँ हो गया. थैंक गॉड ब्रो. So I mean 2000 and it will throw error. Cool, right? Now meanwhile a hydration error. Meanwhile all of this will be happening. Let's create another state of loading, which would be false, right? And if it will be loading,
अगर लोड हो रहा होगा तो हम यहाँ पे कुछ दिखाएंगे, नहीं तो ये सब करेंगे जो यहाँ हो रहा है, राइट। एंड आई टेक दिस आउट एंड आई पेस्ट इट हियर। यस, तो इट विल बी ग्रेट। लोड होगा तो रेडिक्स आइकन्स पे जाएंगे, रेडिक्स आइकन्स नहीं, लोड सर्कल। लोड का आइकन कैसे बनाऊं? लेट्स सी, होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। डॉटेड सर्कल, कुछ तो होगा जो घूमने का वो दे सके यूजर को। ये दे सकते हैं, दिस इज वन ऑप्शन, बट लेट्स लुक फॉर समथिंग बेटर। ये एक ऑप्शन है, बट ऐसा ही कुछ तो वहां पे भी था शायद। डिजाइन में था ना, कहाँ गया? I saw something, no, अरे right now we just saw something here, was it's the same thing. This is refresh. Let's quickly go to MUI icons. एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोड दैट केस, तू ही आजा मेरे सूटकेस। सिंपल सिंपल आइकन, क्लास नेम पूरी उठा लेंगे ऐसी की ऐसी। नॉट ट्रू, क्लास नेम साइज 5 टेक्स्ट फोरग्राउंड कर्सर को कुछ नहीं, और पेन एनिमेट स्पेल, राइट। Meanwhile, yeah,
edit 2. This is still not working properly. What? ये छोटा सा क्यों हो जाता है यार? तो 7 करेंगे. 3. This is not being rendered properly. Okay, I'm so such a dumb guy. भाई ये तो करा ही नहीं set loading. So when user will click on this, set loading true, and in any of set loading false. Edit you, we'll do a 1, और इसे कर देंगे हम पूरे को disable. अगर लोडिंग हो रही है तो वो डिसेबल्ड रहेगा. ओ भाई टेक्स्ट तो दिखाई नहीं मुझे. टेक्स्ट तो दिखाओ. हेलो. हेलो. व्हाट? भाई डिसेबल्ड में. वेट, लेट्स डू अ थिंग. we'll quickly come here. I'll do one thing. I will do is इसको करते हैं उल्टा. इसको देते हैं हटा और उसको करते हैं तो शिफ्ट आई. राइट. और इसमें जाएंगे हम. Okay, okay. So this is all. अब ये प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आऊं मैं?
है जी। अरे कोई तो मुझे बताओ अब ये प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आऊं मैं? एंड व्हाई इज दैट गेटिंग द हाउ द हेल डू आई इवन डू दैट? यार इनपुट इनपुट ऑफ शेड सीन चलें क्या? शेड सीन, we are closing to our time as well. इसको लो, हटा भाई, उसे हटा ही दे भाई. But how do I make it controlled? Let's see कैसे कर सकते हैं. Let's see. uh, Paste it here, take an input, variant हटाओ, sx को कर दो style, flow heading, flow, इस पूरे को कर दो comment, value input choose. I know dude, this should work. Let's see, this works. यार उसका वो अच्छा नहीं लग रहा है. उसका वो अच्छा नहीं लग रहा है यार. वो इस मामले में टेक्स्ट फील्ड ही बेटर था. We'll have to figure out something with text field only. Quickly, let's quickly figure out, friends. We have this, and we have that property as well. Yeah. Oh, okay.
लेट्स कि एटलीस्ट हमें प्रॉपर्टी आ रही है, अब हमें इसे ओवरराइड करना है। तो उसके लिए हम उसे देंगे यहाँ पे ऐसे से रखा है। डॉट इनमें डिसेबल्ड दे रखा है मैंने। ठीक है, लेट्स दिस इज वन क्लास पूरी। वाओ ड्यूड। do a 0 0 0, but still it's not visible because we are screwing it up. Okay, let's here मैं यहाँ अप्लाई कर लूँगा। ये क्लास हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा CSS काम करता है ना, करता है ना माही। Okay, it climbed up. बट इसकी कोई वैल्यू तो 14 है यार। हाँ, अनसेट ही कर दूं, अनसेट कर देता हूँ। नॉट दिस, अनसेट। Cool, it worked. And now we are gonna give it uh, opacity as, or maybe just color. RGBA 0, 0, RGB 0, 0, 0 और 4 0 हो गए ना। 255। Okay. So we are gonna do 255 and यहाँ पे 0.75। Come on, turn the radio on. It's Friday night. It won't be long. As Friday night भी है। Yeah, cool. It makes sense. And now we are gonna remove this, and we need to do this as well. Yeah. I mean, how can I even do that? I don't even know.
ओके इट वर्कड और हमें कुछ वार्निंग्स भी मिली हैं which does not matter. And now if I go here, come here, false. 0.75 is like wheelless. Let's do a 0.5. Then it will be fun. I still think it was 0.75. See this one. This one comes fine. वो close करते ही फट क्यों गया भाई? तो in that case हम यहाँ पे एक और div लगा सकते हैं. Let's see if I do this. Come on. Let me do a div class name text base font thin light normal medium normal and I'll cut this, put it here, and I mean and then I do need oh its font dies. Wow. Font weight anyhow I did not change. 400 500 600 400 4000 lol. Font weight 400 होता है ना, नॉर्मली 400 ही होता है ना. हाँ 500 बड़ा हो जाता है. ऐसी गलती करूंगा दोस्तों तो कैसे ही काम चलेगा मेरा. remove this, remove this, save this, come here, make a change here, save it here, and yes, let's go boys, let's go. ओके तो पार्ट 1 डन. कल हम आके सबसे पहले अपनी डेटा टेबल को फिक्स करेंगे, स्कीमा अपडेट करेंगे एंड देन we'll move to the delete and edit button here, right? ठीक है दोस्तों, और मतलब एक्शंस बेसिकली, राइट? और ये सब ऐसे ही रहेगा. ठीक है चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, इट वाज रियली 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 फन लर्निंग टुडे, ग्रेट लर्निंग्स. ठीक है तो मिलता है आपसे कल. चलो बाय, राधे राधे.